A very good morning to all dear parents and my dear students. Once again, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Class Junior KG, Subject English. Today we will do the revision of cursive letters. आज हम क्या करेंगे बच्चों? आज हम cursive letters का revision करेंगे. Now take out your pencil and eraser and hold your pencil like this. आपको pencil कैसे hold करनी है बच्चों? Like this. नाउ आपको क्या लिखना है बच्चों? कर्सिव लेटर में हम रिविजन कर रहे हैं. सबसे पहले लेटर ए फॉर एप्पल. नाउ ड्रॉ विथ मी. पुट योर पेंसिल ऑन द ब्लू लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन. ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस. वन मोर स्लैंटिंग लाइन. ओके, एंड ड्रॉ अ कर्व बिटवीन दीज टू लाइन्स. दिस इज लेटर ए फॉर एप्पल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? A-P-P-L-E. Apple. Now A for apple के बाद B for ball. Now put your pencil on the dot. Draw a slanting line. One more slanting line and a semicircle, loop and one more semicircle. This is letter B. B for ball. B for बॉल. बॉल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉल? B-A-L-L. बॉल. नाउ बी फॉर बॉल के बाद C फॉर कैट. ड्रॉ विथ मी. पुट योर पेंसिल ऑन द ब्लू लाइन. ड्रॉ अ कर्व एंड अ सेमी सर्कल. दिस इज लेटर C. C फॉर कैट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैट? C-A-T. Now C for cat के बाद D for duck. Put your pencil on the dot. Draw a slanting line, a loop, then draw a semicircle and stop here. This is letter D. D for duck. What is the spelling of duck? D-U-C-K. Duck. Now D for duck के बाद E for elephant. E for elephant. Now draw with me. Put your pencil on the blue line. Draw a curve, a semicircle, one more semicircle. Stop here. This is letter E. E for elephant. What is the spelling of elephant? E-L-E-P-H-A-N-T. एलिफेंट. E फॉर एलिफेंट के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? F. F फॉर फिश. नाउ ड्रॉ विथ मी. ड्रॉ अ कर्व, अ स्लैंटिंग लाइन, अगेन अ कर्व, नाउ स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट ब्लू लाइन. दिस इज लेटर F. F फॉर फिश. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फिश? F-I-S-H. फिश. नाउ F फॉर फिश के बाद G. G for grapes. Draw with me. Put your pencil on the blue line. Draw a curve and a semicircle from red line to the first blue line. Then draw a slanting line and a curve. This is letter G. G for grapes. What is the spelling of grapes? G-R-A-P-E-S. grapes. G for grapes के बाद बच्चों क्या आता है? H. H for house. Draw with me a curve, a slanting line from red line to the blue line and again a slanting line and a loop between these two lines. This is letter H. H for house. What is the spelling of house? H-O-U-S-E. house. Now house के बाद कौन सा लेटर? I. I for igloo. Draw with me a curve, slanting line, again a slanting line and a curve. This is letter I. I for igloo. What is the spelling of igloo? I-G-L-O-O. igloo.
नाउ आई फॉर इग्लू के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? J for joker. J for joker. Now we will write the J for joker. Draw with me. आज आपको क्या करना है बच्चों? J for joker लिखना है but without tracing. आपको डॉट्स गिवन नहीं है, आपको without tracing J for joker लिखना है. Now put your pencil here. Draw a curve and a slanting line like this from the red line and draw a curve. This is letter J. J for joker. What is the spelling of joker? J O K E R. Joker. Now again see here how to draw J. Draw a curve here between the blue lines and a slanting line and a curve. This is letter J. J for joker. What is the spelling of joker? J O K E R. Joker. Again draw with me. See here a curve in between the blue lines, red line take a slanting line, then a curve. This is letter J. J for joker. What is the spelling of joker? J O K E R. Joker. Now again draw with me. J O K E R. See here a curve between these two blue lines. रेड लाइन तक आपको क्या बनाना है? स्लैंटिंग लाइन, देन अ कर्व. दिस इज लेटर J. नाउ what you have to do? You have to do homework. In your homework you have to practice the letter J and from A for apple to J for joker. कर्सिव लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है. देन पिक क्लिक करके स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है. This is your homework. Okay, till then, take care and keep studying.